everyone, I hope आप लोग अच्छे हो. Let's learn about oblique collision. ठीक है. So in this short session we are going to learn what is oblique collision. When we call collision is oblique, we will learn how to write momentum conservation in this case, how to write energy conservation, and how to write coefficient of restitution. तो चलो start करते हैं. We are having two bodies here. Let's say this is body A and this is body B. A and B are having masses m1 and m2 and they are moving towards right with the speed u1 and u2 respectively, right? Now, why this collision will be called oblique if it occur? Okay? And why and when this collision will occur actually जब तुम्हारा u1 is greater than u2, then only A will be able to approach B and they will meet. I mean they will collide. Okay? So let's say u1 is greater than u2. Done है? Now, let's talk about why this collision will be called oblique. So, सबसे पहले आप एक काम करो, आप डायग्राम बनाओ of the body just before collision. So, this is A, this is B, just before collision. And mark their center of masses. So, center of mass of A I am marking as C1 and center of mass of B I am marking as C2. Now, you do one thing, you combine their center of masses. और इनके सेंटर ऑफ मास को कंबाइन कर कर आप देखो जो लाइन मिल रहा है दैट लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ इम्पैक्ट. डन है. दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस वन आई हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड इन हेड ऑन कोलिजन. इफ यू वांट टू चेक दैट यू कैन नाउ क्लिक ऑन द आई बटन and after that you can watch it, but if you feel like you're confident enough in head on collision you can continue with this one. Okay, so line of impact. And what is this line of impact? लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहने का मतलब वो लाइन जिसके अलोंग फोर्स लगेगा ड्यूरिंग कोलिजन. ठीक है, डन है. सो दिस लाइन इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट इन कोलिजन टॉपिक. एंड हियर यू कैन सी लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए. line of motion of A is this, line of motion of B is this, but line of impact it is this, है ना? So there is a line of motion is not parallel to line of impact for both the bodies, right? And since it is not parallel, it is making certain angle, let's say theta. इसीलिए हम क्या बुलाएंगे, ये collision तुम्हारा कैसा collision है? This is oblique collision. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस कोलिजन? अब देखो जब ये बॉडी कोलाइड करेगा एट दिस पॉइंट collision is happening, takkar is happening, and at this point A will apply force on B and B will apply force on A along the line of impact, right? So सो लेट्स इंडिकेट इट. देखो ए पर तुम्हारा फोर्स एफ लगा ऊपर की तरफ, तो बी पे फोर्स लगेगा डाउनवर्ड अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड फोर्स मैग्नीट्यूड सेम होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ. सो व्हाट यू एक्सपेक्ट हियर टू हैपन? क्या दिख रहा है तुम्हें? You just talk about the velocity of A, that is u1. u1 in which direction? In this direction. So you need to break this velocity into two components. ठीक है. Whenever you are dealing with oblique collision, you need to define coordinate system very carefully. One line will be along the line of impact. So एक x axis आप मान लो line of impact वाले line को, and y axis आप मान लो which is perpendicular to this line of impact. So y axis कुछ ऐसा मान लो A के लिए and y axis कुछ ऐसा मान लो आप B के लिए. ठीक है. So this is the y axis, this is the y axis. Now you break velocity along these two lines x and y. So if you break it, आपको दिख रहा है u का component इधर कितना होगा, u1 sin theta, and what will be the component of u1 along x axis? That is u1 cos theta. So what do you think? Which component of velocity of A is going to change because of collision? So आप clearly देख रहे हो force is acting along the line of impact and y axis is perpendicular to it. So there is no component of force along the y axis, and since there is no force acting along the y axis, whatever component of velocity A has in the direction of y axis will remain unchanged. है ना? ये तो unchanged रहने वाला है. क्लियर है. एंड विच इज गोइंग टू चेंज? u1 cos थीटा, क्योंकि u1 cos थीटा इज इन द डाउनवर्ड सेंस अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द अपवर्ड सेंस. डन है. सो दिस u1 cos थीटा इज गोइंग टू डिक्रीज. डन है. सिमिलर थिंग यू कैन एक्सप्लेन फॉर b. b has velocity along x axis u2 cos थीटा.
ठीक है, एंड अलोंग y axis u2 sin theta. Again, force acting on B is along the line of impact in a downward sense. This force is in the same direction in which it has velocity u1 cos theta, right? So इस force की वजह से u1 cos theta का value बढ़ने वाला है, यानी कि B की velocity along the line of impact is going to increase, and B की velocity along the y axis which is equal to u2 sin theta will not change because इस direction में कोई force नहीं है. डन है. सो आप मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे करोगे? आप मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या लिखोगे? इनिशियल मोमेंटम, कैन यू से एम यू वन प्लस एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू? You cannot write this. This will be utterly wrong, completely wrong. क्योंकि देखो u1 is not going to remain conserved. u1 का एक कंपोनेंट, आई मीन कंबाइंड अगर सिस्टम की बात करो तो ए और बी पे जो फोर्स लग रहा है, इस सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा है, दैट इज एक्टिंग अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, एंड अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ दिस फोर्स मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड ऑफ द सिस्टम. ठीक है, मोमेंटम कांस्टेंट कौन से डायरेक्शन में रहेगा? वाई डायरेक्शन में. वाई डायरेक्शन में इफ यू से व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर एंड बिफोर द कोलिजन, सो आफ्टर एंड बिफोर द कोलिजन इसका मोमेंटम सेम रहने वाला है m1 u1 sin थीटा. सो अलोंग द वाई एक्सिस मोमेंटम कंजर्व नहीं है, मोमेंटम कांस्टेंट है. ठीक है, सो अलोंग वाई एक्सिस बी का भी मोमेंटम क्या होने वाला है? कांस्टेंट होने वाला है. इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. डन है. बट सिस्टम का जो मोमेंटम है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ए प्लस बी का मोमेंटम अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, दैट विल रिमेन कंजर्व, क्योंकि अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो. अगेन फोर्स लग रहा है, इंडिविजुअल बॉडीज पे फोर्स लग रहा है, ए पे लग रहा है, बी पे लग रहा है. सो वेलोसिटी चेंजिंग इंडिविजुअली फॉर बॉडी ए एंड बी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट. But overall, if you talk about momentum of the system, that will be conserved. And that is why momentum conservation की बात हम हमेशा कौन से direction में करते हैं? Along the line of impact. So if you have to go for momentum conservation, कौन से direction में करोगे आप? You will do that along the line of impact. So write initial momentum of system along the line of impact. So that will be m1 u1 cos theta for A, and that will be m2 u2 cos theta for B. This is going to be the initial momentum of the system. ठीक है, अब चलो देखते हैं यहाँ पे A के साथ क्या हुआ. So for A what happened? A, I mean A का before collision along the line of impact velocity is u1 cos theta, along y-axis u1 sin theta. After collision what will occur? Along line of impact velocity is going to change. So let's say u1 cos theta से that had changed to v1. Done है? And you can clearly see here u1 cos theta is greater than v1. आई मीन वेलोसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज, क्योंकि इस पे फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट सेंस में लगा है ना, क्योंकि इस पे फोर्स इधर लगा था और उसकी वेलोसिटी इनिशियली इस डायरेक्शन में थी, डाउनवर्ड. ठीक है, सो वेलोसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज. अब आप बात करो वाई एक्सिस के अलोंग, सो वेलोसिटी विल रिमेन अनचेंज्ड बिकॉज नो फोर्स इज एक्टिंग इन दैट डायरेक्शन. डन है. दिस इज फॉर योर बॉडी ए. इफ यू टॉक अबाउट बॉडी बी, then for body B, you can say initial before collision, it has velocity u2 cos theta along the line of impact, and along y-axis, it has a speed of u2 sin theta. So after collision, along line of impact, velocity changes to v2, and you can see v2 will be greater than u2 cos theta. Why? Because on B, force is acting in the direction of initial velocity. ठीक है, done it. So this is this, and along y-axis velocity is not going to change. Done it. So what will be the final momentum of the system along line of impact? So that is this m1 v1 plus m2 v2. ठीक है, सो अगर अगर आपको मोमेंटम कंजर्वेशन करना है तो आप क्या लिखोगे? पी आई इक्वल टू पी एफ m1 u1 cos theta plus m2 u2 cos theta m1 v1 plus m2 v2. So always go for momentum conservation along line of impact. ठीक है, I will again take you to all those diagrams before. ठीक है, इस चीज को हम और भी डिटेल में हमें देखना चाहिए. अगर तुमसे कोई ये पूछता है कि in which direction body A will move
after collision. So before collision, body A was moving in which sense? Body A was moving in which sense, batao? In this sense, right? After collision, what is happening? After collision, if you check u1 sine theta, I mean before collision, u1 velocity, which is resultant of u1 sine theta and u1 cos theta, and this is this, right? And after collision, if you see, after collision, net velocity will be the resultant of u1 sine theta and v1, right? And you just check u1 cos theta is greater than v1, yani ki v1 is less than that of u1 cos theta. So in vector, you know, अगर आपको दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है ए एंड बी, so initially let's say a and b का resultant ये है, and now if you're going to decrease b, then resultant, if you're decreasing b, so if you're decreasing b, now resultant will be in which sense? Resultant will tilt more towards a, ये a की तरफ ज्यादा भागेगा, right? Because b is decreasing means a और b के बीच का gap और बढ़ रहा है. So A is getting more bigger in that sense, you can say, right? So resultant will get more tilted towards A. And so if you have to talk here about in which direction body A will go after collision, you will say it will make certain, I mean, it will go in this direction. So it will move like this. Okay. You won't draw the net velocity ka direction this way. You will draw it this way. Why? Because V1 is less than that of U1 cos theta. So you have to be careful with all these sorts of geometry. इसलिए मैंने अब यहाँ पे एक काम करो, B की बात करो. अगर B की आप बात कर रहे हो, so initially what? Initially its net velocity direction is along horizontal sense. So resultant of U2 sin theta and U2 cos theta is U2 in horizontal sense. U2 sin theta to constant है, V2 is increasing. So if it is increasing, the resultant will dip towards V2. So it will look like this. So you will say that A will move in this sense and B will move in this sense. ठीक है? Done it? So this thing also you should have in your mind कि after collision, their direction of motion will get decided how. So that you should be clear about. चलो, हमने वो भी देख लिया, मोमेंटम कंजर्वेशन भी कर लिया, ठीक है? अब हम काम करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की. अगर तुम्हारा ये सिस्टम में कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, लेट्स से जिस किसी भी सरफेस पे ये दोनों बॉडीज है, ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, and in that case we can say kinetic energy of the body is conserved, क्योंकि when these bodies A and B are moving, they are on the surface. So if some, I mean they are on the table, let's say, so table is at a constant height from the earth, so potential energy change is not in the spectrum. Potential energy तब change होता है जब height change होती है. So these two bodies A and B, these two bodies A and B are in which sense? They are in, I mean they are on the table, horizontal table. So they are at a constant height from the earth, and that is why you will say कि in इस system का potential energy क्या है? Constant पहले से. So if there is no dissipative force acting, then you will say mechanical energy is constant. And mechanical energy is sum of what? Potential plus kinetic is equal to constant. So potential is also constant. So you will say kinetic energy is also constant. Right? Clear है? So you write the initial energy of the system. System हमारा क्या है? ये दोनों बॉल. इसकी initial energy क्या होगी? Initial velocity क्या था? A का. A का initial velocity was U1. And what was the initial velocity of B? That was U2. So initial kinetic energy half M1 U1 का square plus half M2 U2 का square. Final velocity, let's say V1 net है इसका और इसका है V2 net. So अकॉर्डिंगली यू विल राइट. बट यहाँ पे आप ये मत सोचना कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग का एनर्जी लिखना है, नहीं. मोमेंटम कंजर्वेशन वी विल डू अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, बट ओवरऑल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं. कंजर्वेशन में वी आर डूइंग कंजर्वेशन ऑफ ओवरऑल एनर्जी. सो ओवरऑल वेलोसिटी वी विल बी टेकिंग. सो सेकेंड इक्वेशन आप क्या लिखोगे? आप कुछ ऐसा लिखो. ठीक है, डन. क्लियर है? सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. और भी इक्वेशंस आप लिख सकते थे, और भी इक्वेशंस आप क्या लिख सकते हो? देखो,
एक काम करते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हो कि अगर तुमने ये डिफाइन किया, सपोज करो तुम्हें क्वेश्चन में ये दिया कि वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन इज दिस v1 नेट, ठीक है, एंड लेट्स से ये एंगल दिया हुआ है अल्फा, डन है, एंड इट विल आस्क कि लेट मी नो द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बिफोर कोलिजन। इनिशियल वेलोसिटी मींस वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इट इज आस्किंग। तो आप ये कहोगे ना कि v1n cos अल्फा will be equal to u1 sin theta, क्योंकि u1 sin theta is not going to change, velocity along y direction is not going to change, so whatever velocity was along y direction initially will be velocity along y direction finally. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आपको किसी क्वेश्चन में हेल्प कर सकता है, ठीक है। सेकंड केस में आप क्या लिख सकते हो, अगर सेकंड में अगर आपने वेलोसिटी लिखा है क्या, अगर आपने सेकंड की वेलोसिटी लिखी है, सपोज कर लो नेट, सॉरी ये तो डिप डाउन कर रहा था ना, नेट वेलोसिटी इसका ले लो आप v2n, सो इट्स लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा डैश, सो यू विल राइट व्हाट v2n cos alpha dash will be equal to u2 sin theta. So in the question, if theta is given and alpha dash is given, v1 and v2n is given, you can easily calculate u1 or u2, right? Now let's write a coefficient of restitution, that is E. E को हम कैसे लिखते हैं? E को हम लिखते हैं velocity of separation divided by velocity of approach. So this thing I have already discussed in head-on collision topic. Again, you can check with that. वहाँ पे मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए I won't be detailing it here, but yeah, I will let you know how to write it in this case. So coefficient of restitution, that is E, that also you will write along which sense? That also you will write along line of impact. हमेशा याद रखो, this thing also you're going to write along what? Line of impact. So along line of impact, what is the velocity before collision? So that is u1 cos theta, and for this body it was how much? u2 cos theta, done it. And initially I have told you u1 is greater than u2, so it feels like a is approaching b along the line of impact. So velocity of approach को आप क्या लिखने वाले हो, बताओ? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आप क्या लिखोगे? u1 cos theta minus u2 cos theta, right? And what will be velocity of separation? Initially I have told you that v2 is greater than v1. So finally after collision it feels like b is going away from a along the line of impact. So you will write velocity of separation as v2 minus v1, ठीक है? So this is v2 minus v1. Now the question is why we are writing coefficient of restitution along the line of impact? Because I mean this term, it has to do with collision forces, ठीक है? And that force and that collision is occurring along the line of impact, ठीक है? And that is why we will be writing coefficient of restitution also along the line of impact. So कभी भी गलती से velocity of approach को u1 minus u2 मत लिखना, that will give you wrong answer, ठीक है? So this thing you have to keep in mind. Again, if collision is elastic, E will be equal to 1. If collision is completely inelastic, you already know these things, E is equal to 0. That is, they after collision they will become 1, so there won't be separation. Velocity of separation in this case will become 0. And if collision is inelastic, I mean if it is in between elastic and completely inelastic, then E value will be greater than 0 but less than 1. So this thing already we have done in head on collision, we have discussed in detail, ठीक है? I hope you have understood oblique collision quite clearly कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जिसको ध्यान से देखना है, डन है? Even if you feel like you are having doubt somewhere or you feel like you're getting stuck somewhere, you can let me know in the comment section. Thank you.